राम राम सबको। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सब मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। आज पता ना, आज अपनी सैटरडे है आज। और आज अपन पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा मैं, और आप जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो मेरे साथ। मैं आपके साथ रहूंगा 20 मिनट, ठीक है? 20 मिनट तक अपन बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है? मैं तो किससे पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा भाई मेरी जो सीए वाले बच्चे मुझे देख के जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? भाई लोग को मैं तो इससे पढ़ता हूँ रिविजन के लिए। मैं आपको भी प्रेफर करूंगा कि आप ये बुक ले लो। कुछ नहीं ज़्यादा भाई, 297 रुपए की है। 4 सब्जेक्ट रिवीजन के लिए 1 नंबर बुक है, ठीक है? मैं इससे पढ़ रहा हूँ, आप भी अब पढ़ो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्ट्रीमिंग तो स्टार्ट है ही, चलो पढ़ते हैं। चलो। Income has not been smooth. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है 2007 एंड कोरोना पैंडेमिक 2019, ठीक है? Joel define business economics in terms of economic analysis in the formulation of business policies. Business economy include linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis, and cost analysis. Two major part of economics: microeconomics और macroeconomics. दोस्तों आपको ही बोल बोल के पढ़ना है, ठीक है? आंखें नहीं चलानी है। अगर थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना तो बोल बोल के पढ़ो, ठीक है? आंखें नहीं चलानी। और प्रैक्टिकल कर रहे हो तो मैं तो बोल रहा हूँ इतना जरूरी नहीं है, पर तो आप बिना उसके कर रहे हो ना, थ्योरी का कर रहे हो तो बोल बोल के पढ़ो, जिससे याद रहेगा अपन को। Microeconomics is the study of behavior of different individuals and organizations within an economic system. Example of microeconomics है product pricing, consumer behavior, factor pricing, the behavior of firms, location of industry, etc. ठीक है? Macroeconomics is the study of overall economic phenomena as a whole. It is also called aggregate economics. Example of macroeconomics क्या है? National income and national output, general price level and interest rate, balance of trade and balance of payment, the external value of currency, etc. The nature of business economics is a science based on microeconomics, incorporates element of macroanalysis. Business economics is also an art. ठीक है? Uses of theory of market and private enterprises, interdisciplinary in nature, pragmatic, practical in approach. Two lines of economic theory: A. Positive, cause and effect relationship without value as what ought to be judgment. Normative है, involves value as what should be judgment. ठीक है? Two categories of business issue क्या है? Microeconomics applied to operational or internal issue. Macroeconomics is applied to environmental or external issue. ठीक है? Operational issue: demand analysis and forecasting, production and cost analysis, inventory management, resource allocation, profit analysis. ठीक है? External issue क्या है? Are the economic system, stage of the business cycle, government policy, social and political environment, etc. Basic problem of an economy: what to produce, ठीक है? Consumer, how to produce, labor capital intensive, for whom to produce, distribution of goods and services. ठीक है? Three broad classification of economics क्या है? Broad है capital economy, owned and controlled by individuals for profit. Socialist and welfare motive के लिए. Mixed, involve both social and capitalist. A capitalist economy is also known as a free market economy or laissez-faire economy. ठीक है? Characteristics of the capitalist economy बोलता है right to private property, freedom of enterprises, profit motive, consumer sovereignty,
competition, absence of government interference, freedom of economic choice. ये characteristics है. Merits of capitalist economy क्या भाई? Automated है, greater efficiency, cost of production is minimized होता है, higher standard of living होती है, democratic framework होता है, encourage enterprise and risk taking. Demerit of capitalism होता है social unrest and class conflict, ignore human welfare, exploitation of labor, misallocation of resources, unplanned production, formation of monopolies. ठीक है. Characteristics of social economy: collective ownership, absence of consumer choice, relatively equal income distribution, minimum role of the market, absence of competition. Merits of socialism क्या बोलता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज होता है, अवॉइड क्लास वॉर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है. डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म: प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, always take basic rights, no proper basis for cost calculation, no freedom of choice, personal efficiency and productivity, not at all practicable. ठीक है, बहुत बढ़िया. फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी है coexistence of public and private sector, हाँ, encourages enterprise and risk risk taking, suffers from substantial uncertainties और प्राइस मैकेनिज्म. तीन सेक्टर क्या है इंडस्ट्री के? एक तो प्राइवेट ओन एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप, बी है ब्रिक सेक्टर, और थर्ड है कंबाइंड बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. नोट है स्टडी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन पॉलिसी, रिसोर्स allocation, capital budgeting, risk and uncertainty analysis are the outside the scope of this book. ठीक है. They will be taught in the other subject financial management, strategic management. It is a high level of CA course. देखिए दोस्तों, मैंने मेरा एक चैप्टर पूरा कर लिया है. इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स मात्र 7 मिनट के अंदर कर लिया. मैं देखो ये कमाल है इस बुक का, ये कमाल है इस बुक का. नहीं तो मैं वो अपने मॉडल से पढ़ता ना, मॉडल गलत नहीं बोल रहा, कम से कम मुझे लग जाता है उसको पढ़ते पढ़ते लग जाते कम से कम 1 से 1.5 घंटा. तो बात सही बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ आपको बुक ले लो. लो तो आपकी मर्जी, नहीं लो तो मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें. एक चैप्टर हो गया, मैं टिक लगा लेता हूँ मेरा. आपके कितने चैप्टर है कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से लाइव चैट में. मेरा तो भाई हो गया. देखो अभी तक मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर पूरे कर लिए इस बुक से. अब एक बच्चा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये और अभी सल्टा दूंगा बढ़िया तरीके से. ये कितना है पेज पे 318. ठीक है. अगर आपका अभी तक हुआ नहीं तो घबराइए मत, करिए आराम से करिए. 20 मिनट तक यहाँ पे बैठा हो आपके साथ. आप जल्दी ज्वाइन होइए ना, ज्वाइन हो जल्दी जल्दी. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में चलते हैं. चलो भाई पहुंच गए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. 1 2 3 4 पेज में समाप्त थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ते हैं और मेरा भी बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा करता हूँ. चलो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर नंबर 3. टेक्निक ये फॉलो करनी है आपको. थ्योरी सब्जेक्ट बोल बोल के पढ़ना है, प्रैक्टिकल बिना बोल करना है. ठीक है. चलो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ते हैं. इन इकोनॉमिक्स, production is an economic activity directed to the satisfaction of the wants of the people. ठीक है. According to James Bates and J.R. Parkinson, production is the organized activity of transforming resources into finished product in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. Method of production कौन कौन से है? Creation of utility. पहला फॉर्म यूटिलिटी, चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स को फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं. ठीक है. दूसरे प्लेस यूटिलिटी, चेंजिंग प्लेस वेयर देयर दे आर ऑफ लिटिल और नो यूज टू अनदर प्लेस. ठीक है. वेयर दे आर ऑफ ग्रेटर यूज. ठीक. टाइम यूटिलिटी, मेकिंग मटेरियल अवेलेबल एट ऑल टाइम्स. पर्सनल यूटिलिटी होती है मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज ऑफ सी डॉट. ठीक है. अगला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू इनपुट. ठीक है.
It includes land, labor, capital, and entrepreneur. The term land is used in a specific sense in economics. It does not mean soil or earth's surface alone but refers to all gift of nature, including land in common parlance, natural resources, fertility of soil, water, etc. Characteristics of land are पहला गिफ्ट ऑफ नेचर फिक्स है परमानेंट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल सो खत्म नहीं कर सकते ठीक है इमोबाइल है मल्टीपल यूजेस और हेट्रोजीनस है अलग ठीक है अगला बात करते हैं भाई लेबर की लेबर इज ए फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर क्या है उनसे ह्यूमन एफर्ट है पेरिशेबल है इंसेपरेबल फ्रॉम द लेबर है may not be productive, poor bargaining power, mobile, choice between hours of labor and hours of leisure. ठीक है. The supply curve of the labor is backward bending. ठीक. एक बता नहीं आपको बात बताता हूँ देखो एक तो होता है लेबर एक होता है लेबरर ठीक है लेबर अपने वो घर में जो काम करने आते हैं वो कलर वगैरह करना हो कोई घर बनाना हो तो अपन जो मिस्त्री वगैरह वो आदमी अपन लेबर बोलते हैं कभी कभी वो पत्थर वगैरह उठाते हैं ना उनको लेबर बोलते हैं ना वो लेबर नहीं बोलते उनको लेबरर बोलते हैं लेबर होता है मेंटल फिजिकल एग्जर्शन मतलब मानसिक और शारीरिक शक्ति को लेबर बोलते हैं अपन 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 ही है उससे कुछ बोलते हैं अपन ठीक है एक सप्लाई करो लेबर का वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है ये भी याद capital is that part of the wealth of an individual or community used for further production of wealth. Capital is a stock concept, ठीक है इनकम इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट ये बड़े पॉइंट है कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट और इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है फिक्स्ड कैपिटल टूल मशीन ठीक है सर्कुलेटिंग कैपिटल सीड फ्यूल रॉ मटेरियल इटीसी सी होती है रियल कैपिटल बिल्डिंग प्लांट मशीन इटीसी डी होती है ह्यूमन कैपिटल स्किल एबिलिटी ई ये होती है इंटेंजिबल कैपिटल कॉपीराइट वगैरह ये इंडिविजुअल कैपिटल होती है एक सोशल कैपिटल होती है एक कैपिटल फॉर्मेशन होता है ठीक है कैपिटल फॉर्मेशन मींस ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन ए कंट्री इन अदर वर्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ more capital goods like machines, tools, factors, transport equipment, electricity, etc., which are all used for further production of goods. Therefore, capital formation is also known as investment. Wow. There are three stages of capital formation saving, mobilization of saving, or investment. An entrepreneur is called the organizer, the manager, or the risk taker. Function of entrepreneur है पहला initiating business enterprises, risk bearing innovations. The objective of an enterprise may be broadly categorized as a organic objective, economic objective, social objectives, human objectives और national objectives ठीक है enterprise की problem क्या है problem relating to objectives है पहला second है problem relating to location and size of plant तीसरा problem relating to selecting and organizing physical facilities D है problems relating to finance और ई है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एफ का है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस ठीक है द एंटरप्राइज हैज टू डिसाइड ऑन फोर पीस नेमली फर्स्ट प्रोडक्ट वैरायटी क्वालिटी डिजाइन ये वगैरह ठीक है सेकंड प्रमोशन पर्सनल सेलिंग सोशल कॉन्टैक्ट एडवर्टाइजिंग ये वगैरह तीसरा है प्राइस डिस्काउंट वगैरह ये फोर्थ प्लेस जनरल डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन एंड लेआउट ऑफ स्टोर्स इन्वेंटरी लॉजिस्टिक्स प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट प्रोडक्ट द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए बी सी डी से ठीक है अगला assumption ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड state of the art in the production technology. C. Input combination are included in a particular function. The output resulting from their utilization is at the maximum level. भाई लोग एक पेज पढ़ लिया अपन ने तो 6 मिनट बाकी है फर्स्ट चैप्टर 6 मिनट में पूरा करना है मुझे चैप्टर थोड़ा पानी तो पी लेते हैं अपन आप भी पी लो है तो आपके पास
चल भाई शर्मा, मजा आगे का. A period will be considered a short-term period if the amount of at least one of the input used remain unchanged during that period. In the long run, all factor input in the production function can be changed. The behavior of output consequent to change in the quantity of all factor input in the same proportion is known as return to scale. Return to scale may be of three types. एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. इनपुट इंक्रीज किया 100% से और आउटपुट इंक्रीज बाय 100 से ज़्यादा से वो तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. कांस्टेंट में इनपुट है ना वो बढ़ा 100 से और आउटपुट भी 100 से बढ़ रहा है तो कांस्टेंट है. और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता है इनपुट है ना 100 से बढ़ा और आउटपुट घटा है 100 से कम है तो डिमिनिशिंग. ठीक है. द कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टेटेड दैट क्वांटिटी ऑफ KLAC 1 minus a where Q is output, L is the quantity of labor और C as the quantity of capital. ठीक है. K और A पॉजिटिव कांस्टेंट है. ठीक है सर, कोई बात नहीं. According to law of variable proportion, as more and more units of a variable factor are combined with the same quantity of fixed factor, the total product first increases at an increasing rate, then diminishing rate, and finally start falling. Thus, it is a short-term concept. ठीक है. Total product is the total output resulting from all the factor of production combined at any time. Average product is the total product per unit of variable factor, that is AP equal total product divided by number of units of. Marginal product is the change in total product per unit change in the quantity of variable factor. Marginal product होगा change in total product divided by change in unit of the variable factor. ठीक है. Relationship between average product and marginal product. When average product is rises, marginal product is more than the average product. When average product is maximum, MP is equal to average product. When the average product fall, marginal product is less than average product. Assumption of low variable proportion state of technology is assumed to be given and unchanged. Some input whose quantity is kept fixed does not apply to those cases where the factor must be used in fixed proportion to yield output. Only physical input and output and not economic profitability in monetary terms. Point of inflection is that point on TP at which MP is maximum. Saturation point is the point at which Tp is maximum and Mp is zero. The law of return to scale is applicable in the long run where all the factor input can be changed. Constant return to scale का मतलब है that with the increase in the scale in some proportion output increases in the same proportion. Linear homogeneous production function quantity of x equal function of KL if all the input are increased by a certain amount, output increases in the same proportion. Increasing return to scale means that the output increases in greater proportion than the increase in inputs. Decreasing return to scale means output increases in a smaller proportion relative to an increase in all input. Decreasing return to scale are said to prevail. Isoquant are similar to indifference curves in the theory of consumer behavior. An isoquant represents all those combinations of input that are capable of producing the same level of output. Isoquant are also called equal product curve, production indifference curve, or iso product curve. Isoquant are negatively sloped convex to the origin due to diminishing marginal rate of technical substitution and are non-intersecting. ISO cost or equal cost line are also known as budget line or budget constant line shows the various alternative combination of two factor that the firm can buy with a given outlay. Accounting cost outlay explicit code those costs involving cash payment by the entrepreneur. Implicit cost non-accounting cost refers to cost of factor owned by the entrepreneur himself and employed in his own business. Example rent of self owned building interest in self owned capital.
अब चलते हैं भाई लोग, 2 पेज बच रहे मेरे तो अभी भी, वो पूरा करके उठूंगा मैं तो। अब आप देख लो, आपके भी बाकी है तो आप भी कर लो। इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट को, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट है टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट। Direct or traceable costs are those which have a direct relationship with the component of operation like manufacturing of product, organizing a process or an activity, etc. Indirect or non-traceable costs are not easily identifiable in relation to a plant, product, process, or department. Therefore, such costs are not visibly traceable to specific goods, services, or operation, etc. Incremental cost refers to the additional cost incurred by a firm as a result of a business decision. Example, firm where it decided to change its product line, replace worn out machinery by a new production facility. Some costs refer to those costs which are already incurred once and for all and cannot be recovered. Example, advertising, specialized equipment, and fixed facilities such as railway lines. Historical cost refers to the cost incurred in the past on the acquisition of a product, assets such as machinery, building, etc. Replacement cost is the money expenditure that has to be incurred for replacing an old asset. Instability in prices make these two costs differ. Private costs are incurred or provided for by firm and are either explicit or implicit. Social costs refer to the total cost borne by the society on account of business activity and include private cost and external cost. Fixed on ongoing costs are not function of output. They do not vary with output up to a certain activity level. These costs require a fixed expenditure of fund irrespective of the level of output. Example, rent, property, depreciation. Variable costs are costs that are function of output in the production period. For example, wages of casual labor and cost of raw material in the cost of all other input that vary with output are variable costs. Some costs are neither perfectly variable or nor fixed in relation to change in output size, known as semi-variable cost. Example, electricity charges include both fixed and variable. Average fixed cost is obtained by dividing the total fixed cost by the number of units of output. Average variable cost is found by dividing the total variable cost by the output. और एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज एटीसी इक्वल हो जाएगा एएफसी प्लस एबीसी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट and मार्जिनल कॉस्ट क्या है? A, when the average cost fall, marginal cost is less than average cost. When the average cost rises, MC marginal cost is more than average cost. When average cost is minimum, marginal cost is equal to the average cost. A long run cost can depict the functional relationship between output and the long run cost of production. The long term period is a period in which all factors can be varied. There is only variable cost. It does not have a fixed cost. So the law of return to scale applies here. In the long run, all input is variable because the fixed cost in the short run can be changed in the long run. Accordingly, there are no TFC or AFC curve in the long run. There is no distinction between TC and TBC. ठीक है? In the long run, the firm will produce the output at which SSC is minimum, short and average cost is minimum. LSC, long run average cost curve, is often also called planning curve because a firm plan to produce any output in the long run by choosing or a plant on the LSC curve corresponding to the given output. Increasing return to scale, LSC decreases, economy arises. द कॉन्सेंट्रेशन में एलएसी मिनिमम होता है, डिक्रीजिंग में एलएसी इंक्रीज होता है, डिसइकोनॉमिक में। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो कॉल्ड द एनवेलप कर्व because it envelops or support a family of shorter average cost curve. Economies of scale refer to advantage available to the firm as it expand production.
This economies of scale refers to the disadvantage available to the firm as it expands production. Yeah. Internal economy of scale are firm specific that is available only to those firms which seeks to increase their output level. External economies are those economies which are available to all the firms in the industry. The LAC curve helps the firm choose the size of plant or for producing a specific output at the least possible cost. इंटरनल इकोनॉमी डिसइकोनॉमी है. टेक्निकल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज है. बी मैनेजरल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमिक्स. कमर्शियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज. फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज है. रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमी. एक्सटर्नल इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी के cheaper raw material and capital equipment है. बी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक्स है. डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर है. ग्रोथ ऑफ एंसिलरी है. इंडस्ट्रीज, बैटरी ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग फैसिलिटीज. और मेरा भाई साहब ये चैप्टर भी पूरा हो गया. थर्ड चैप्टर भी इकोनॉमिक्स का पूरा कर लिया मैंने. भाई साहब आपको पता है क्या हो, अपन ने एक पोमोडोरो टेक्निक है ना जापान वाली, वो अपना ली अपन ने. 25 मिनट पढ़ने वाली थी. 25 मिनट 2 चैप्टर का रिवीजन हुआ. बढ़िया रिवीजन के लिए बढ़िया ये पोमोडोरो टेक्निक. ये देखो भाई साहब कमाल की बुक है. परफेक्ट रिवीजन. मानो या ना मानो, मेरे लिए तो बढ़िया है. मैंने तो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर पूरे कर लिए. 25 मिनट 2 चैप्टर और 3 मैंने पहले कर लिए थे. ठीक है. देखो आज के लिए इतना ही. स्ट्रीम एंड करने में आ गई है अपनी. ठीक है. 6 मिनट में ऊपर ले ली मैंने. 20 मिनट का बोला था आपको, पर 6 मिनट थोड़ी ऊपर. कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइम चलता है इसे. ठीक है. अब देखो, अब मैं रुचिना आपके लिए ऐसे स्ट्रीम से लेके आऊंगा जिसमें आपको भी आना है मेरे साथ पढ़ना है. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टाटा, राम राम.